Okay, so today we are going to start the autonomic control of gastrointestinal tract. This one. Everyone clear? Is there any problem? Invisibility? No? No, sir. It's clear to everyone? Okay. Parasympathetic stimulation increases the activity of the entire nervous system. As we already know, जैसा कि हम लोगों को पहले ही पता है कि जो ऑटोनॉमिक कंट्रोल है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट उसमें दो सिस्टम है पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक जो है वो इंक्रीज करता है एक्टिविटी बिकॉज एज वी ऑलरेडी नो the parasympathetic system is the system of rest and digest. So definitely in case of parasympathetic stimulation the gastrointestinal secretions and motility will be enhanced or will be increased. The parasympathetic supply to the gut is divided into the cranial and sacral as we have already studied when we were discussing the autonomic physiology, right everyone? Yes, sir. Divided which we discussed in chapter discuss कर चुके हैं पहले. The cranial parasympathetic nerve fibers are almost entirely in the vagus nerve. आपको पता है vagus nerve जो है ना वो ज्यादातर कंट्रोल कर रही होती है. These fibers provide the extensive innervation to the esophagus. Esophagus को provide करती है stomach को, pancreas को, and somewhat to the intestine as well. Okay. The sacral sympathetic originate in the second, third, and fourth sacral segments. ये हम आप पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमें आप लोगों को क्लास में पढ़ा रहा था कि वो जो फाइबर्स निकल रहे थे सैक्रल रीजन से आप सप्लाई करते थे डिफरेंट लोअर जीआईटी ट्रैक को. ठीक है, तो ये उन्हीं की बात बता रहा है. स्पाइनल कॉर्ड पास थ्रू द पेल्विक नर्व्स टू डिस्टल हाफ ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एंड ऑल द वे टू द एनस. ठीक है, तो ये आगे वो पार्ट्स बता रहा है कि जिस जिसको ये फाइबर्स क्या करें इनरवेट कर रहे हैं. The sigmoidal, rectal, and the and anal region are considerably better supplied with the parasympathetic fibers than our other intestine. ठीक हो गया. Okay. Stimulation of the ये important है. Stimulation of this parasympathetic nerve causes the general increase in the activity of the entire nervous system, which in turn enhances the activity of most gastrointestinal functions. ठीक है. Have you people got this one? Is there any problem? Should we move further? यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके. अब आ जाते हैं सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन. हमें पता है यूजुअली इनहिबिट्स द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एक्टिविटी. The sympathetic fibers to the gastrointestinal tract originate in the spinal cord between the E5 to L2. वो regions जो है thoracic, lumbar, sacral. Most of preganglion fibers that originate the gut after leaving the cord entire enter the sympathetic. आप लोगों को याद है sympathetic chain ganglion? Sympathetic chain ganglia हमने पढ़ा था. क्या पढ़ा था? Sympathetic chain ganglia. Switch off Sir. your mics. Most of the preganglionic fibers that innervate the gut after leaving the cord enter the sympathetic chain ganglia that lies lateral to the spinal cord. Yes. दोनों साइडों पे चेन गैंग्लिया होता है क्योंकि दोनों फाइबर्स दोनों साइड से जो है नर्व्स निकल रही होती है. And many of these fibers then pass on the chain ganglia as celiac ganglia and various mesenteric ganglia. ये हम लोगों ने नाम पढ़े थे celiac ganglia, ठीक है, mesenteric ganglia, superior mesenteric, lower extracellular इस तरह. Propose fiber extra हम फंक्शन की तरफ आते हैं. Sympathetic nerve ending secretes mainly. Yes, ये भी हमें पता है. The sympathetic nerve ending secretes mainly the norepinephrine. और नॉरएपिनेफ्रिन किस तरह गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एक्टिविटी को रिड्यूस करती है, वो ऑलरेडी नो इट. यस और नो? मैं पता है कि Yes, नहीं? sir. ओके. Yes, sir. Endogenous stimulation of the sympathetic nervous system inhibits the activity of the gastrointestinal tract, causing many effects opposite to those of the parasympathetic. मैं पता है parasympathetic system of the rest and digest means that
is going to increase the activity. And in case of sympathetic, it is going to decrease the gastrointestinal secretion and motility. Okay, it exerts its effect in two ways. To slightly extend by direct effect on the secreted norepinephrine to inhibit the intestinal tract, smooth muscle, except the mucosal, which, okay. And to the major extent by the inhibitory effect norepinephrine on the neurons of the entire nerves. ठीक हो गया वो कहता है कि नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो जो है ना जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की जो एक्टिविटी है उसको रिड्यूस करती है। ठीक है, किस तरह? एक तो जो इनहिबिटरी, वो जो हमने कल पेप्टाइड्स पढ़े थे कि ये चीजें जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्टिविटी को काम करती हैं उनके लेवल को ज्यादा करती हैं। और दूसरा, डायरेक्ट जीआईटी को क्या करती हैं? इनहिबिट बाय रिसेप्टर्स। याद है जैसे कल सीआर ने बताया था। ठीक है, याद है कि नहीं? और तीसरी बात ये है कि ब्लड सप्लाई को काम करे, जैसे कि मैंने कल ये बताया था। याद है? जी सर। इसमें ये वाला। No, you people should be very clear that how sympathetic and parasympathetic system is going to play with gastrointestinal tract. Okay, is there any problem till now? No, sir. Okay. सब लोग हॉस्टल में आए, चले गए हैं घर? हैं? कुछ चले गए। आगे वो कह रहे हैं efferent sensory nerve fiber from the gut। ये देखो, ये कल हमने पढ़े थे, याद है? ये देखो, ये sensory neuron, these are the sensory neurons। अब वो कह रहा है कि ये किस तरह सिग्नल भेजते हैं कि हाउ टू इंटरफेयर द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्टिविटी। Many afferent sensory nerve fibers innervate the gut. Some of the nerve fibers have their cell bodies in the indirect nervous system, and some have them in the dorsal root ganglia of the spinal cord. Okay, no issue. These sensory nerve fibers can be stimulated by, देखो वो कहता है कि ये sensory neurons जो है, नजर आ रहे हैं? How these sensory neurons are going to interfere with GIT motility। पहले वो क्या कहते हैं? इरिटेट द गट म्यूकोजा। ठीक है, जब इरिटेट होती है तो फिर ये सिग्नल भेजते हैं किधर? ब्रेन की तरफ कि अब क्या करना है। एक्सेसिव डिस्टेंशन ऑफ द गट, यस, जब वो ज्यादा डिस्टेंड हो जाए, जब वो ज्यादा क्या हो जाए? मतलब कि अगर आप लोगों ने खुराक खाई है ना तो जैसे जाएगी, तो अगर जीआईटी के जो वाया है वो बढ़ रहा है, उसका ल्यूमन बढ़ रहा है, तो फिर भी ये सिग्नल भेजते हैं जीआईटी की तरफ, सॉरी ब्रेन की तरफ कि अब हमने क्या करना है। नेक्स्ट है हमारे पास द प्रेजेंस ऑफ द स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस इन द गट। वो कहता है कि व्हेन स्पेसिफिक केमिकल रिलीज होते हैं गट में तो फिर भी ये सिग्नल जनरेट करते हैं। सिग्नल ट्रांसमिटेड थ्रू fibers can then cause excitation or under other condition inhibit of the gastrointestinal movements or intestinal secretion। ठीक है, अब ये आप लोगों को इस बात की समझ आ रही है कि नहीं कि व्हाट आई एम सेइंग? बताओ, आप लोगों को समझ आ रही है इस बात की कि क्या मैं कह रहा हूँ अभी? What is meant by these sensory gut neurons? जी सर समझ आ रहे। थर्ड पॉइंट रिपीट कर दो सर। सर ये सर है ये कि एक तो दोबारा बता दें। कौन सा? बोलो तो सही ना, आप लोग बोल ही नहीं रहे। The सर जी presence, लास्ट अच्छा थर्ड, the presence of specific chemical substances in the gut। वो कहते हैं कि जो सपोज फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल कि ये आपकी जीआईटी थी ना,
आप लोगों ने कोई फूड खाई, ठीक है, तो वो कोई पॉइजनस सब्सटेंस आप लोगों ने इंजेस्ट कर लिया, ठीक है, तो वो सपोज ये पॉइजनस सब्सटेंस है, तो वो क्या करेगा, अभी आप लोगों की जीआईटी को इरिटेट करेगा। अब जब ये जीआईटी इरिटेट करेगा तो यहाँ से अब सिग्नल कौन जीआईटी से लेके जाएगा उधर ब्रेन की तरफ, कि इज देयर इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस इन द जीआईटी, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जीआईटी की एक्टिविटी को अब हमने, ये जीआईटी अपनी एक्टिविटी को और ये मूवमेंट को रेगुलेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। सपोज कोई बैक्टीरिया था, ठीक है, तो आप लोग को जैसे वोमिटिंग होती है, पता है आप लोगों को वोमिटिंग कब होती है, जब हमारा कोई ऐसा सब्सटेंस जो जो है ना वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, या कोई टॉक्सिक सब्सटेंस था, तो आपकी जीआईटी को ना एंटी पेरिस्टालसिस के लिए ऊपर की तरफ उसकी मूवमेंट स्टार्ट करवा देता है। पहले नॉर्मली मूवमेंट्स इधर चल रहे हैं, अब वो क्या करता है, वापस जीआईटी की मूवमेंट्स जिसको एंटी पेरिस्टालसिस कहते हैं। तो ये इस तरह अब वो जीआईटी को कैसे पता लगेगा कि वहां पे ये वाला सब्सटेंस टॉक्सिक सब्सटेंस है, कोई बैक्टीरिया है, कोई चीज, तो इसेंशियल फाइबर्स लेके जाएंगे। तो अब वो जो केमिकल ये है, ये यहाँ पे कुछ और सब्सटेंसेस को भी यहाँ पे रिलीज करवा सकता है, जो कि यहाँ से सिग्नल जनरेट करेंगे सेंसरी न्यूरॉन के लिए। ऐसे वो इस तरह सेंसरी न्यूरॉन है ना यहाँ पे जीआईटी में, तो वो जो केमिकल रिलीज हुआ वो यहाँ पे अपने रिसेप्टर को ऑन करेगा, वो रिसेप्टर सिग्नल को थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वो ब्रेन की तरफ ले जाएगा। अब वहां पे वो देखेगा हमें वोमिटिंग करवानी है, एंटीपेरिस्टालसिस करवानी है, या मोटिलिटी को ज्यादा करना है, काम करना है। अब समझ आई बात? जी Have सर। you got the जी सर। point? Yes or no? यस सर। Next. अब ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लेक्स आप लोगों ने नहीं करना, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हार्मोनल, वैसे आप लोगों ने खुद ही पढ़ लेना है इसको, ये जो रिफ्लेक्स वाला था, अगर ना समझ आ जाएगा टेल यू। ओके, नेक्स्ट, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, अभी हम क्या पढ़ नर्वस रहे हैं, कंट्रोल सर। नर्वस कंट्रोल। अब कौन सा कंट्रोल है, नाउ विच कंट्रोल वी आर गोइंग, दिस इज द हार्मोनल कंट्रोल। और लोगों को पता है बॉडी में जो मेनली जो कोऑर्डिनेशन है वो दो ही मेन सिस्टम है जो कंट्रोल करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ग्लैंड्स या एंडोक्राइन सिस्टम। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। ओके, नो स्टार्ट। The gastrointestinal hormones are released into the portal circulation. As you people already know, what is portal circulation? Are you people familiar with this term? Yes, no? I have told you people. यस सर। यस सर। Okay, good. And exert physiological action on the target cell with a specific receptor for the hormones. Okay. The effect of the hormone persists even after all the nervous connections between the site of release and the site of action have been solved. Okay. ये कोई नहीं यहाँ पे important, अब आ गया। अब no, no. He will tell which kind of different peptides, hormones, or substances to interfere with the GIT motility. अब ये यहाँ पे बात बताएगा। ओके, सम, क्या कह रहे हो, some of more important motility effects are described in the following. Okay, अब यहाँ से ये this is important. गैस्ट्रिन इज secreted by, अब गैस्ट्रिन क्या है, ये एक हार्मोन है, गैस्ट्रिन इज द हार्मोन। अब ये बताएगा आप लोगों को, अब ये चीज आप लोगों ने ना अपने जहनों में बिठानी है। अब ये वाइवा के क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है, इसी में अब आप उसे पूछा जा सकता है, यू पीपल कैन बी आस्क्ड what is gastrin, from where this gastrin is going to be produced in the gastrointestinal tract, what is the function of this gastrin, so you people should know about it. From from which cells this gastrin is going to be produced. तो ये बातें भी आप लोगों ने याद रखनी है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ओके,
Gastrin is the hormone secreted by the G cells of the antrum of stomach. Are people familiar with antrum? I have told Yes, you sir. people already. In response to the stimuli associated with the ingestion of the meal, जब आप खाना खाते हैं, such as distension of the stomach, जब आप खाना खाते हो तो आपका stomach एक बार expand करता है, distend करता है, then this gastrin from the G cells of the antrum of the stomach is going to be produced. The products of the proteins, आपने कोई protein diet खाई है, and gastrin releasing peptide, which is released by the nerves of the gastric mucosa during the vagal stimulation. वो कहता है कि गैस्ट्रिन रिलीजिंग एक पेप्टाइड है GRP, इसको क्या कहते हैं? GRP, which is released by the nerves of the gastric mucosa during the vagal stimulation. अब ये एक्शन बताएगा. The primary action of the gastrin are, अब ये याद रखने वाले लोगों ने, stimulate the gastric acid secretion and stimulation of the growth of the gastric mucosa. अब वो पता है ना, ये स्टमक है, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल ये स्टमक है, ठीक है, वो कहता है कि जो एसिड सिक्रेशन है, एससीएल सिक्रेशन, आपको पता है ना स्टमक में एससीएल प्रोड्यूस होता है, और उसके अलावा जो ये म्यूकोज है अंदर किसका, स्टमक का, ये उसको भी जो है ना उसकी भी ग्रोथ में इन्वॉल्व है. ये दो मेन फंक्शन ऑफ द गैस्ट. ओके फाइन. नेक्स्ट, कोलिसिस्टोकाइनिन. अच्छा, आप लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि अब ये आप लोगों ने याद रखना है, गैस्ट्रिन का एचसीएल के प्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट है, ठीक है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर नेक्स्ट ईयर फार्माकोलॉजी एज वेल, ठीक है, बिकॉज इन द नेक्स्ट ईयर यू पीपल विल बी डिस्कसिंग द ड्रग्स इनहिबिटिंग द एचसीएल सिक्रेशन, ठीक है. तो आप लोगों को फिर पता होना चाहिए कि विच आर द स्टिमुलेटरी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द एचसीएल सिक्रेशन इन द स्टमक. सही है, समझ रहे हो मेरी बात क्या नहीं? जी सर. जी सर. Switch off your cameras and mics and everything. Okay, cholecystokinin is secreted. Abhi you know the and other hormone is CCK. Remember, this will be asked in the Viva. Cholecystokinin is very famous hormone and it is widely asked in the Viva. By eye cell in the mucosa of the duodenum and jejunum, mainly in the response to the digestible और फैट फैटी एसिड, जब आप फैट फैटी एसिड खुराक खाते हैं तो दिस CCK is going to produce monosaccharide in the intestinal bladder. This hormone strongly contracts the gall bladder. Yes, gall bladder को ये कॉन्ट्रैक्ट करवाता है. एक्सपेलिंग द, आपको पता है ना कि अब याद करो कि जो गाल ब्लैडर है उसके अंदर सारी सिक्रेशंस होती हैं, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट करके अपना सारा जो है ना मटेरियल वो फिर स्फिंक्टर ऑफ ओडी के जरिए इंटेस्टाइन के अंदर भेजता है, याद है? तो वो फिर सारी जी जो सर. जो फूड आ रही जी होती है वो सर. उसको वहां पे डाइजेस्ट करता है, ठीक है. तो उसके अब देखो, जैसे ही आपकी फैटी फूड पहुंचेगी किधर, ड्यूडेनम ज्यूजिनम में, तो सडनली this CCK will be produced, it will go and it will contract the gallbladder. Gallbladder will be contracted, all of its material will be drained or will be pushed into the duodenum and jejunum of the small intestine, okay, and the digestion and all the food stuff containing fat will be broken down into its constituents by the gallbladder content. सही है, समझ आ रही है बात? Yes sir. जी सर. Expelling bile into the small intestine where the bile intestine plays important role in emulsifying fatty substances and allowing them to be digested and absorbed. CCK also inhibit the stomach contraction moderately. वो कहता है कि ये stomach की जो है ना contraction को भी काम करता है. Therefore, at the same time that is this hormone causes the emptying of the gallbladder. Gallbladder emptying मतलब है कि उसमें से सारा material उसमें से ये drain करवाता है, ठीक है. It also slows the emptying of the food from the stomach to give the adequate time for the digestion of the fat and the upper intestine. ठीक है, वो कहता है कि ये क्या करता है, ये स्टमक की जो मूवमेंट है उसको कम करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सिक्रेशन है उसको बढ़ाता है ताकि उधर
स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इसका ज्यादा काम है, तो इसलिए वो कहता है कि जो स्टमक है उसमें जो कंटेंट है वो इधर ना आए, ताकि पहले जो ऑलरेडी मौजूद है स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको पहले डाइजेस्ट किया जाए, फिर बाद में आया जाए। ठीक है, तो जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है डाइजेस्ट, सारे ब्रेक डाउन हो जाती है, तो फिर ये इसकी सिक्रेशन कम हो जाती है, फिर स्टमक की सिक्रेशन या स्टमक की मूवमेंट बढ़ती है, फिर वो सारी चीजें स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है, फिर सीसी के सिक्रेशन बढ़ जाती है, ये फिर आगे, तो इस तरह ये साइकिल चलता रहता है। समझ आ रही है इस बात की नहीं? Yes, sir. sir, To give the adequate time for the digestion of the fat, okay, inhibits the, okay, these fiber and signal wagon not going to the feeding centers in the point. Okay, fine. Next, ये खत्म हो गया। Next, secretin. Secretin. Secretin, the first gastrointestinal hormone discovered, is secreted by the S cells in the mucosa of the duodenum in response to the excreted gastric juice emptied into the duodenum from the pylorus of the stomach. तो कहते हैं कि secretin वो जो है duodenum से प्रोड्यूस होता है, और ये कब रिलीज होता है? जब आपका एसिडिक कंटेंट ड्रेन होता है किसमें, आपकी intestine में। Secretin has mild effect on the motility of the gastrointestinal tract and acts to promote the pancreatic secretion of the bicarbonates, which in turn helps to neutralize the acids in the small intestine. Means that secretin जो है ये duodenum से प्रोड्यूस होकर ये पैंक्रियास की secretions को बढ़ाता है, और वहां से बाइकार्बोनेट को भेजता है, ताकि पूरी HCl आ रहा है एसिडिक मटेरियल उसको वहां पे न्यूट्रलाइज किया जाए। ठीक हो गया? Have you got the point? Is there any problem to anybody? Okay. Next, glucose dependent insulinotropic peptide, also called as GIP. ये याद रखना आप लोगों ने, दिस गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ये आप लोगों ने क्यों याद रखना है? यू पीपल हैव टू रिमेंबर दिस बिकॉज these hormones having some association with the diabetes. ठीक है, जब आप लोग डायबिटीज पढ़ रहे होंगे तो ये आ रहे होंगे गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, GLP से आगे आएंगे कुछ, तो आप लोगों ने ये याद रखना है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज देयर रोल, ये क्या करते हैं और इनका क्या लिंक है गैस्ट डायबिटीज के साथ। ठीक है, इट्स क्रिएटेड बाय द म्यूकोसा ऑफ द अपर स्मॉल इंटेस्टाइन मेनली इन द, देखो मैं आप लोगों को हर चीज कनेक्ट करके बता रहा होता हूँ कि ये आपको कहाँ पे काम आएगा। सही है? Yes, sir. Mainly in response to fatty acid and amino acid, but to lesser extent in response to the carbohydrate. It has mild effect on decreasing the motor activity of the stomach and it slows emptying of the gastric content into the duodenum when the upper small intestine is already overloaded with the food product. तो ये इसका काम उसने बता दिया। ओके, नो आगे अब ये जो है ना ये पैराग्राफ, इसमें ये सारे उसने बताया हुआ है, ये तीनों को लेने से सम अप किया हुआ है। कहते हैं गैस्ट्रिन ये काम करता है, प्रोटीन डिस्टेंशन होती है तो तब ये प्रोड्यूस होता है, जी सेल से प्रोड्यूस होता है, और ये काम करता है गैस्ट्रिक सिक्रीशन को बढ़ाते हैं, बिकॉज जो ग्रोथ इन्वॉल्व होता है उसमें इन्वॉल्व होता है। नो, आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? आ रही है सर। ओके, बस ये CCK को बता रहा है। CCK क्या करता है? ये प्रोटीन और फैट के जब कंटेंट आता है तो तब ये प्रोड्यूस होता है, आई सेल से प्रोड्यूस होता है एंड इट परफॉर्म दीस फंक्शंस। स्केलेटन प्रोड्यूस होता है व्हेन एसिड एंड फैट आर कमिंग, एस सेल्स ऑफ द duodenum से प्रोड्यूस होता है, और ये मतलब काम करता है एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी प्रोवाइड, GIP भी इसको कहते हैं। अब ये आप लोगों से पूछ सकते हैं व्हाट इज GIP, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द GIP, तो यू पीपल हैव टू रिमेंबर इंसुलिन रिलीज को इनहिबिट करता है और ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन को बढ़ाता है। देखा, इंसुलिन के साथ इसका लेना देना है, तो लोगों को पता है इंसुलिन इज आल्सो हैविंग सम इंटरफेरेंस विद द डायबिटीज, इंसुलिन का भी उसके साथ लिंक है। उसके बाद मोटेलिन, मोटेलिन आ गया है आई थिंक, हाँ यस। वो कहते हैं मोटेलिन जो है ना वो फैट और एसिड में जो है ना उसके केस में प्रोड्यूस होता है, M सेल्स ऑफ द duodenum से प्रोड्यूस होता है, और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड K सेल्स ऑफ द duodenum से प्रोड्यूस होता है। ये काम करता है और ये काम करता है। ठीक है, कौन सा सिक्रीशन वाला? ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन पेप्टाइड ब्लड वेसल। ओके, अब ये मोटेलिन का उसने फंक्शन ऊपर बता दिया, तो आप लोगों ने खुद ये पढ़ लेना। ठीक है, इज देयर एनी प्रॉब्लम? अब ये मोटेलिन के बारे में वो कह रहे हैं कि ये M सेल्स ऑफ द duodenum से प्रोड्यूस होता है, और ये गैस्ट्रिक मोटिलिटी और इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को ये स्टिमुलेट करता है। ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी? ही और शी कैन आस्क।
ये अब हमारा अभी हमने in this lecture we basically discussed. I am going to sum up the lecture. We discussed the autonomic control regarding parasympathetic and sympathetic control. Parasympathetic is going to increase the GIT modality excretion. Sympathetic is going to decrease the GIT modality and the effect of some hormone on the GIT tract. And these hormones are gastrin, CCK, secretin, gastrin inhibitory peptide, Mughal, extract, and their functions. Is there any question to anybody he or she can ask? Otherwise, lecture is finished. And tomorrow we will start movements of the gastrointestinal tract. Is there any question? You people can ask. Otherwise, the lecture is over now. Question is the time for the question. It's the time for questions. Or it's time for question. Ask me questions. Is there any question? To anybody he or she can ask. Otherwise, you people may leave. Any question? Yes, this can be asked in the paper. Autonomic control and hormonal control of the control of gastrointestinal tract. कुछ भी पूछा जा सकता है. Next question. Next question. अभी we have 2.5 minutes. You people can ask question. You people can ask questions. Relevant or irrelevant question. No, अभी लास्ट लेक्चर नहीं है. अभी है कुछ चीजें रहती हैं अभी इम्पोर्टेंट है. अभी ये पूरा वीक लेक्चर्स होंगे शाम को इसी टाइम पे. ठीक है. इज देयर एनी प्रॉब्लम? No, sir. Is there any question?